Hey guys, I'm Janvi and बहुत सारे दिन हो गए थे. So I'm making this video on a special request. मुझे कल एक email आया था बहुत. It was a very well written email. Thank you so much. It was very touching. उस email में एक request थी कि can I request you a video? I just completed my 10th standard and I will soon be joining a college. So could you please make a video about interacting with fellow students and teachers if you are a bit shy and coward? I just can't gather the courage to talk to anybody in one-on-one conversation. Finally, I would like to thank you for all your videos and for motivating us. Excuse my mistakes in the email, if any. Once again, I'm sorry to bother you to reply. Oh, thank you so much, and you've not bothered me. And congratulations for such an amazing score. Um, yes, first of all, coward. Nobody is coward. If you cannot go and talk to someone, if you don't have the courage to talk to someone, probably you're an introvert. दो टाइप की पर्सनालिटीज़ होती है, एक एक्सट्रोवर्ट होती है और एक इंट्रोवर्ट होती है. एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन सी बचपन से, मतलब चाइल्डहुड से. इफ़ यू सी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हु डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल, हु डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विथ पीपल. Whereas there are some kids who are very extrovert, they will just start talking to random people in the train or anywhere that they go. So it's a kind of a personality that you have. And दोनों टाइप की पर्सनैलिटीज़ के प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं. जैसे एक्सट्रोवर्ट के प्लसेस होते हैं कि दे कैन जेल अराउंड वेल, दे आर गुड लीडर्स एंड दे कैन डू वेल इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे प्रेजेंटेशंस होते हैं या परफॉर्म करना होता है, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टेज फियर एक्सेट्रा. जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी क्वालिटीज़ ये होती है कि दे आर वेरी क्रिएटिव, दे कैन बी मोर इन टच विद देयर ओन सेल्फ. They think they are into reading most of the times. And मतलब दोनों की प्लसेस माइनसेस होती हैं. इंट्रोवर्ट के माइनसेस होते हैं कि दे कांट रियली एडजस्ट, और लाइक इफ दे गो टू न्यू सिचुएशन, शायद नए फ्रेंड्स बनाना एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके जो 2-3 फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, या फॉर एग्जाम्पल जेसी में, जूनियर कॉलेज में, तभी जब उनको छोड़कर उन्हें जब आगे जाना होता है तो इंट्रोवर्ट्स फील अ लिटिल स्केर्ड एंड वरिड कि हाउ विल आई डू इट. एंड एक्सट्रोवर्ट्स आर ओके, वो लोग कहीं भी जाके नए नए फ्रेंड्स बना लेते हैं. यानी कॉलेज में हमेशा आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा ही जो पूरी कॉलेज को जानता हो, बिकॉज दे जस्ट गो एंड टॉक टू एवरीबडी एंड दे एनरोल इन एवरी प्रोग्राम सो दैट दे कैन मेक मोर एंड मोर न्यू फ्रेंड्स. But if you are an introvert, it's okay. Doesn't mean that there's anything bad. But conversation, it's a very good question कि how to engage in a one-on-one conversation. So I'll tell you about myself. सबसे पहले कि जब मैं छोटी थी तब मेरे रिपोर्ट कार्ड्स में टीचर ये लिखते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता कि लड़की मेरे क्लास में प्रेजेंट है जब तक मैं अटेंडेंस ना लूँ. दिस वाज स्टिल अबाउट 3rd-4th स्टैंडर्ड तक तो ये था ही कि टीचर्स वुड ऑलवेज राइट इन माई रिपोर्ट कार्ड एज अ, जो कमेंट करनी होती है उनमें वो लोग लिखते थे कि आई कैन फील हर एब्सेंट प्रेजेंस इन माई क्लास, और आई एन्जॉय हर साइलेंट प्रेजेंस, some things like that. So I wouldn't go and talk to a lot of people. मैं खुद ऐसी थी. But then I got into this sports called archery, यानी जो बो एंड एरो, धनुर्विद्या जैसे कहते हैं. तो आर्चरी जब मैंने शुरू किया तब से धीरे धीरे करके मेरी पर्सनैलिटी चेंज होने लगी. एंड पर्सनैलिटी इन द सेंस मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई, और आई कुड गो एंड टॉक टू पीपल. बेसिकली राइट नाउ ऑल्सो आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके साथ वीडियो बनाए हैं, वो लोग बहुत डर रहे थे या खुद मुझे बोलते थे कि तू रूम के बाहर चली जा तो ये मैं वीडियो बना सकती हूँ या सकता हूँ. सो द नेचर इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. शायद मैंने बहुत जल्दी मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर ली थी. यानी जो completely quiet in class होती थी वो सबसे ज़्यादा I started being active and I started being among the leaders etc. तो it is not very difficult. सबसे पहले what you have to do is have confidence in yourself. A lot of times you might feel कि what will the other person think about me. See, there's nobody who judges you all the time. अभी आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एंड जब मैं किसी को बोलती हूँ ना, लोगों को लगता है मैं पूरा टाइम लोगों के माइंड पढ़ते रहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ डॉक्टर, वो जब चलता है रोड पर तो वो सबको चेक करते करते थोड़ी चलता है. सेम वे इवन दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, और इवन आफ्टर आई बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, दैट डजंट मीन कि मैं हमेशा लोगों को जज करूँगी कि हैला इसने ऐसे कपड़े पहने, मतलब ये ऐसे ही, इसने वैसे कर. Nobody judges you all the time. Even if it's a psychologist, the psychologist doesn't judge you all the time. And basically you are judging yourself, and that's the reason a lot of times that you cannot go and make conversation with people, because you think what will they think of you. एक it's an insight कि whatever you think about a certain person,
usually the other person always thinks in a similar lines to you, मतलब about you. यानी अगर आप किसी को बहुत hate करते हो without any reason class में, you will always find out that that person will also hate you. मतलब you will never know कि this person also hates me, but you hate that person. The reason why that happens is that non-verbal communication is 97%. यानी verbally आप किसी को जाके बोलोगे नहीं I hate you, but your non-verbals, भले यू डोंट शो डिस्गस्ट और ऑब्वियस इमोशंस लाइक शी, ऐसा आप नहीं भी करोगे तो भी नॉन वर्बल्स के थ्रू उनको पता चल ही जाएगा कि यू नो दिस पर्सन, एंड दे माइट नॉट नो कॉन्शियसली कि दिस पर्सन हेट्स मी, बट अनकॉन्शियस में पता चल जाता है कि दिस पर्सन हेट्स मी, एंड उनका अनकॉन्शियस भी आपको हेट करेगा. So they know consciously that they are hating you, but they don't know consciously that you hate them too, but they know unconsciously. Because unconscious reads all the body language. That is 97% of your, 93% of your communication. 7% is word. Now what happens is, before you start a conversation, just relax and just talk to people as if you're just talking to your mom. Think about the other person as your friend, and सबसे ज़्यादा क्या होगा? Think about the worst. You've gone in college first day, and imagine that you go and approach, you know, 2-3 people. Like if you're a girl, you go and approach 2-3 girls, and what will be the worst thing that happens to you? वो लोग क्या करेंगे? Think about that. At the most, they will ignore you, or they will insult you, or probably they might just try to rag you. उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला. No one's gonna come and murder you. And ये तीनों चीज़ भी यूजुअली नहीं होती है. एवरीबडी इन द कॉलेज इज़ लाइक यू, क्योंकि इवन दे आर न्यू, इवन दे आर नर्वस कि यू नो आई हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स. फिर ऑफकोर्स कुछ लोग लकी होते हैं कि उनके स्कूल फ्रेंड्स साथ में होते हैं, बट इनफैक्ट आई वुड कॉल दैट अनलकी, बिकॉज जब स्कूल फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स. सो लॉट ऑफ पीपल ओनली स्टिक टू दैट स्मॉल लिटिल ग्रुप एंड स्कूल फ्रेंड्स वाला ग्रुप. But those who are like, who have nobody around, if you're in a college where you've got nobody around, that is the time when you should go and approach new people, try and make new friends, because there are a lot of people who will be like-minded. And don't dress according to what you don't like. Don't talk the way you're not comfortable. Don't wear things that you don't like to only because you want to be friends with someone. Be natural, be original as you are. जैसे मैं ऐसे ही होती हूँ. I don't put makeup, and मैं जो पहले कॉलेज में थी वहाँ पे almost हर लड़की मेकअप करती थी. I was always like this. I would never put any liner, lipstick. I would never wear short crop tops, and I would go as मुझे जो comfortable लगता था I would go there, and I like sitting, you know, front benches में so that I can pay attention. I would go and sit in the front. I wouldn't be like front bench में बैठूंगी तो what will people will judge me because last benchers are like the cool people. I never did that. I always sat where I wanted to. I always was like I wanted to. And that's the reason why I've got real friends and not fake friends. So if you try to fake yourself, you know, if you're not very an extroverted kind of a person, don't try to pretend to be one. Just be natural in who you are. And अगर आप first day से natural रहोगे, you will attract the right kind of friends and the right kind of people. And then your college life becomes chill and cool. यानी I don't know if everybody knows about this, but they say, you know, these people who have different kinds of drugs, they have a certain kind of hairstyle जिससे वो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं. People like us, like who don't do anything, they don't have any obvious signs कि, you know, मैं ऐसी हूँ तो मेरी ये ऐसी हेयर स्टाइल होगी और मैं वैसी हूँ तो मेरी वैसी हेयर स्टाइल होगी. It's nothing like that. So we are not sure how to gel in with people who are our types. But my suggestion to you would be just be natural and go and talk to anybody. So if you think positively about everybody, I'm sure they will think the same about you, you know. It's the feelings are always mutual because your body language will communicate more than your words do. So be natural and just go and approach people. Think about the worst. अगर सबसे खराब हुआ तो they will just ignore you or insult you, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. And if they insult you, it's okay. It's मतलब don't let your oh my god मेरा ego hurt हो गया. That keep your ego aside. Ego is not required. Ego must go. So don't, if they like get lost, I don't want to talk to you, I don't talk to cheap people. Suppose किसी ने आपको ये बोल दिया, it's okay, just move away, go and talk to other people. So I'm going to make a difference. And rather it'll be better if somebody insults you and you know you're done with it, क्योंकि it's good that those people are not your kind. You're like a polite person and that person is just opposite. So it's good, but that's not going to happen. That's like the worst case scenario. उससे बुरा और कुछ नहीं होता. So yeah, whenever you're worried or scared about something,
think about the worst that can happen and imagine that happening to you, and उसके बाद जाके you go and meet anybody, and उसके बाद जो भी होगा you will not get scared because you have imagined the worst. So whatever's happening to you, it's going to be much 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 better than what you imagined. So yeah, it's called problem based thinking. So it helps you get out of a lot of worries and fears, and you'll be able to do well in college. And yes, I'll be making videos soon. My phone wasn't working, so this is my brother's phone, so I cannot edit the video, etc. But I'll be uploading. So if you have any requests, please do let me know. I am making one soon with a person who's an IITian and a person who will help us with the timetable and things like that. So yes, I hope this video helps, and all the best to all of you. Congratulations, and attract the right kind of people. See you.